hole in the wedge. You'll have to maybe you'll have to describe more. Okay, JEE Advanced 2020. I think if you can find a photo, I can maybe have a look at that. Tab tak maybe we'll do the first three and then I'll come to that. Photo hai to just you can send that to me or send it on the group. चलो, so toppling का idea एक बार देख लेते हैं. So in toppling, normally what happens is the kind of questions that are asked is, imagine there's a block and there may or may not be friction at the bottom, but sometimes the question can be asked is, if a particular force is applied at a specific height, okay, then they can ask you ki, at what for what value of the force will that block topple, okay? And sometimes they can ask ki, will this particular block topple before it slips? Topple matlab rotate above this point, aisa will it lift off before it slips, or will it what do you say, will it topple before it slips or will it slip before it topples? So that's kind of the idea. So ab isme for toppling, what you'll assume is okay, can I explain how and when does the normal shift? Acha, nahi to no, basically toppling is the concept. Toppling is basically when this body is going to rotate about this point, okay? When it's going to rotate about this point in this manner. All right. Now, when will it rotate about that point? वो देखेंगे. So first of all, for it to rotate about the point, let's say it is starting to rotate about that point. If it is starting to rotate about that point, किसके कारण rotate होगा? ये force के कारण rotate होगा. Let's just take this distance to be as x. Okay? तो ये force के कारण एक torque लगने वाला है, clockwise torque लगने वाला है about that point. And that clockwise torque is going to be F into x. ठीक है? But then at the same time, इस point के center पे gravitational force लगेगा, ठीक है? Which let's say this was a cube, let's say this length was L, okay? So mg into this lever arm, mg into L by 2, and as you can see, this is an anti-clockwise torque. So mg L by 2 का torque opposite sense में लगेगा. तो fx का clockwise torque और mg L by 2 का anti-clockwise torque, ये दो torque लगेंगे, है ना? Now, as long as fx का torque is smaller than this torque, जब ये torque mg के torque से कम है, then what will happen is this toppling will not take place. तो तब फिर क्या scene होगा? mg is trying to then rotate the body in the opposite sense. It's trying to push the body into the floor. So that's when you'll have normal. You'll need the normal to be present over here as well. Okay. So as long as fx mg L by 2 से कम है, ये यहाँ पे भी normal होगा. The question was when does a normal shift? Okay. So as long as gravity का ये restoring clockwise, anti-clockwise torque, gravity का anti-clockwise torque ज़्यादा है, you will have normal over here. And जैसा ही gravity का anti-clockwise torque कम हो गया, कब कम होगा? जब fx इससे ज्यादा हो गया. If fx is greater than mg L by 2, और है ना, and in that condition, now
this block has a tendency to rotate in the clockwise direction. So it's about to rotate about this point और तब यहाँ पे normal नहीं रहेगा, तब normal गायब हो जाए. So then the condition for toppling, what should the force be? So the force should be greater than equal to mg L by 2x in this case. Okay? That should be the force, minimum force required for toppling. And फिर इसमें कभी कभी सवाल आता है, what is the minimum force? I mean, will it topple more or will it slip? Will it topple first or will it slip first? The idea is as we gradually increase this force, पहले toppling आएगा या slipping आएगा, है ना? तो we of course know कि slipping will come when the force is greater than equal to mu times mg. So then you can compare mu ज़्यादा है या L by 2x ज़्यादा है. In fact मुझे बताओ कि अगर 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 mu ज़्यादा है L by 2x से, तो is it going to topple first or is it going to slip first? Mu is greater. Yes, I've been great. Thanks for asking. I hope you guys are good as well. बताओ ये कंडीशन में क्या पहले होगा? Yash, that's right. Yes, perfect. Tanisha, Nitin, सही है सबका. Great. तो because mu ज़्यादा है और L by 2x कम है, F will there is F can overtake this or become greater than this before it can become greater than this. तो पहले वो टॉपलिंग वाला मैक्स सेफ फोर्स जो है ना, टॉपलिंग वाला फोर्स को ओवरटेक करेगा, फिर बाद में लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू को ओवरटेक करेगा if mu is more. So therefore if mu is more, as you keep increasing your force, it will topple first. So that's the kind of question that sometimes is asked. फिर एक ऐसा भी होता है कभी they can ask something like this कि this is totally different concept, but this is I can say this is like topple all the way. मतलब ऐसे क्वेश्चन में तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसा सीन रहता है कि इमेजिन कि यू हैव अ क्यूब लाइक दिस एंड एक से ना एक से एक सेकंड. I don't think it's related to this. But अच्छा, in that question ये जब टॉपल करना स्टार्ट करता है ना? So the question is, चलो forget that. In the previous page when I said कि some object will topple, do you think it will topple all the way या ऐसा उठ के फिर वापस लौटेगा? What do you expect would happen? Would it topple all the way या उठ के लौटेगा? Can you just analyze that? जैसे ही टॉपलिंग वाला कंडीशन ओवरकम हुआ, जैसे ही F became greater than whatever that was, mg L by 2x.
or it topple all the way if you're applying a force of that nature. Think what are happening to the torques. फिलहाल if it's about to topple, हम बोल रहे हैं कि है ना, इसका टॉर्क, कौन सा फोर्स का टॉर्क ग्रेविटी के टॉर्क से ज्यादा है, इसलिए टॉपलिंग स्टार्ट हो रहा है. एंड एज दिस फर्दर कंटिन्यूज टू रोटेट, यू विल एक्चुअली नोटिस कि इन सब्सिक्वेंट पोजीशंस ये जो जहाँ पे स्पेशली अगर फोर्स का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, बट यू नोटिस इन सब्सिक्वेंट पोजीशंस एटलीस्ट ग्रेविटी का टॉर्क जो है कम होते जा रहा है, बिकॉज द सेंटर ऑफ मास इज नाउ कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू दिस वर्टिकल लाइन. मतलब सेंटर ऑफ मास का जो लीवर आर्म है ना, वो कम होते जा रहा है. सो देयरफॉर यू फाइंड कि if the toppling process starts because of some force, it will normally go all the way through and that object will fall, it will topple completely. So even if in a double decker bus or anything like that, if it's turning, it's taking a very sharp turn, जिसके कारण वेरी शार्प टर्न के कारण क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण टॉपलिंग स्टार्ट हो गया. तो क्या होता है वो उन बसेस में, तुम्हारा as the center of mass starts rising, as this starts rotating about this lowest point, तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का टॉर्क बढ़ते जा रहा है, उसका लीवर आर्म बढ़ते जा रहा है, ठीक है, और ग्रेविटी का लीवर आर्म छोटा होते जा रहा है. तो ग्रेविटी का टॉर्क और छोटा होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का टॉर्क और बड़ा होता है. तो वंस द टॉपलिंग स्टार्ट्स, there's no coming back from it. Okay, so that was just one point I wanted to mention, and then I suddenly remembered, इसमें कभी कभी ऐसा ये भी सवाल आ सकता है कि let's say a car was going on a road, and while it was going on the road, there was a stone over here. So because it went over that stone or some heavy boulder or something like that, it received an angular impulse. Okay, जिसके कारण अब इसके पास at this instant एक angular velocity है omega. You can imagine the car to be a cube of mass m and side length l. ठीक है, and maybe you can try this question. ओमेगा कितना होगा, तो एक अलग टाइप है, वो फोर्स के कारण टॉपलिंग, और ये अब ओमेगा के कारण टॉपलिंग. तो ओमेगा कितना होना चाहिए, what is the minimum omega for the car to completely topple? Completely topple. Completely topple मतलब it should go and it should fall on the other side. It should fall on this side. So what is the minimum omega for it to completely topple? Can you try this out? See, this is a different type of question and has nothing to do with the previous type, because you find that the concept that you'll apply is also different. वो force के कारण था, torque के कारण था, यहाँ पे omega based है, because of an initial omega, something hit it from the side. तो अब ये कितना ओमेगा, मतलब ओमेगा कितना होना चाहिए for it to topple?
Any idea? अच्छा, approach क्या होगा? Maybe I'll keep the unmuting of, I mean, since there are a few people over here, perhaps you can, conservation of energy, fair enough. I'll change the settings. जिनको unmute करना है, you could unmute as well. Are you able to write that equation? An equation that can find omega? तो one of you saying so kinetic energy due to omega would displace the center of mass by L by 2 against mg. अब displace the center of mass by L by 2 थोड़ा गलत हो गया, but the notion is right कि kinetic energy is doing work against potential energy. That notion is right, but nahi, it's not going to displace the center of mass by L by 2 exactly. यश, तेरा थोड़ा, in fact yours is almost correct except L was the edge length, तो वो एक छोटा सा I think silly mistake हुआ है, but yes that notion is correct. So देखो इसमें guys क्या ये scene क्या है, देखो scene ये है कि imagine you start rotating this cube, तो ये क्यूब चढ़ेगा चढ़ेगा चढ़ेगा, अच्छा कब तक चढ़ेगा, जब तक मतलब सेंटर ऑफ मास कब तक चढ़ेगा, जब तक क्यूब ऐसा शेप का हो जाएगा, ठीक है, डायमंड ओरिएंटेशन ले, उसके आगे क्या होगा, अब सेंटर ऑफ मास गिरेगा, तो इसके आगे वाला प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, द सेंटर ऑफ मास लाइक्स टू फॉल, इट लाइक्स टू बी इन द लोवेस्ट पॉसिबल ओरिएंटेशन, वंस यू क्रॉस दिस देयर इज नो कमिंग बैक, इसके आगे तो ग्रेविटी उसको और गिराएगा, है ना, बिकॉज ये टॉर्क अब ग्रेविटी का क्लॉकवाइज हो गया, बट वो पोजीशन के पहले ग्रेविटी इसको रुका रहा है, ये पोजीशन के पहले ग्रेविटी का टॉर्क इज ऑपोजिट ओमेगा, ठीक है, सो द आइडिया इज कि दिस इज द क्रिटिकल पोजीशन, इफ आवर सेंटर ऑफ मास रीचेस दैट पॉइंट, ठीक है, इफ आवर सेंटर मास रीचेस दैट पॉइंट देन उसके आगे इट विल फुल्ली फॉल, तो यहाँ पे ओमेगा शुड बी इनफ फॉर इट टू रीच दैट पॉइंट, अब वहां तक पहुंचने के लिए यू जस्ट हैव टू कंजर्व एनर्जी, यश इनफैक्ट योर्स इज perfect except I understood the mistake you made, you just I think you wrote in terms of this length, है ना, तो ये लेंथ, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना है, ये हो जाएगा L by रूट टू, L by रूट टू, ठीक है, और जब ये खड़ा होगा तो भी L by रूट टू होगा, द डिस्टेंस फ्रॉम दिस लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है, जब वो खड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ से या ऊपर जा रहा है, नाउ द हाइट रिजन बाय द सेंटर ऑफ मास will be, तो ये एंगल we all know क्यूब में all these angles are 45 degrees, तो ये एंगल हो जाएगा L by रूट टू cos 45, L by रूट टू cos 45, यानी कि L by रूट टू इंटू 1 by रूट टू, तो ये हाइट हो जाएगा L by 2, ये हाइट हो जाएगा L by 2, जिसके कारण इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज M इंटू G इंटू हाइट रिजन बाय द सेंटर ऑफ मास, तो higher height L by root 2 minus L by root 2 cos theta minus L by 2. So this is the increase in potential energy, right? This should be equal to the decrease in kinetic energy, right? तो kinetic energy कितने से कम हुआ है, फाइनली तो जीरो था, तो स्टार्टिंग में जितना था उतने से कम हुआ है, तो डेल्टा के शुड बी हाफ आई ऑफ द क्यूब into omega square initial minus final,
इनिशियली इतना था, फाइनली 0 था। तो इतने से मतलब जस्ट अगर मिनिमम ओमेगा यूज करेंगे तो फाइनली ये पोजीशन में क्यूब का ओमेगा 0 हो सकता है। even if it just reaches that position and just crosses it, उसके आगे वो completely गिर जाएगा, है ना। तो मिनिमम फाइनल ओमेगा can be 0, okay, when you're trying to find the minimum omega for this to completely topple. तो अब यहाँ से delta u is minus delta k, increase in potential is decrease in kinetic, I substitute कर लो तो क्यूब का सेंटर के थ्रू I बिल्कुल स्क्वायर की तरह होता है, ma square by 6, and I hope you guys know that. तो क्यूब का सेंटर के थ्रू I is ma square by 6, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो प्लस, in fact I should stick to L, ml square by 6 प्लस m into ये डिस्टेंस का स्क्वायर, सेम वन, L by root 2 का स्क्वायर, which is going to be ml square by 2, 3 by 6 plus 1 by 6, 4 by 6, so 2 ml square by 3. So that is I, and that will give you omega. Okay. Did you guys get this? Whoever had asked about toppling, these are like possible variations. एक force के कारण toppling और एक कोई initial omega, एक initial disturbance के कारण toppling. Maybe somebody came and rammed into this box, giving it an impulse. तो एक force के कारण toppling और एक impulse के कारण toppling. ठीक है? Clear? Any doubts in this? है तो बता दो. Is Yash, can you just unmute? Is there any other way of solving it? If you have an idea, maybe you can just talk. Any other way apart from energy conservation? Doesn't seem like it, है ना? No other way apart from energy conservation. ये मतलब classic उसी का case है. Just like, I mean, it's as simple as यहाँ पे rod है, कितना omega दोगे rod को so that it completes a vertical circle. So if you strip it down to the bare minimum, वैसे सवाल है. Rod को कितना omega देना है for it to complete a vertical circle. वैसा ही scene है. All of this can be simplified and this can just be looked at as a point object with some omega about that axis of rotation. So I think energy conservation, you could write the equation in a different way, but it's basically energy conservation. All right, IAOR. तो एक तो IAOR locate करना, if that's your question, how do we locate the IAOR? तो बहुत simple होता है. Like for instance, take the classic question. Constraints का एक question होता है जब यहाँ पे इसका velocity is given to you, let's say as v, this angle is given as theta, and then the length of the rod is given as L. Okay, and you might have tried to find u of, मतलब ऐसा सवाल, you might have tried to find u of this point, the velocity of this end. वो एक constraints based सवाल होता है. But with that, what I'm actually going to ask you to try to find in this is omega. Okay, so we're going to find the omega of the rod. The rod is rotating and moving. So just with V, L and theta, we can even find omega. All right. Now, one way of finding omega is figuring out this velocity and then using these two velocities to find omega, but वो एक लंबा तरीका हो जाएगा. The other way, related to what you were trying to do, is you can find omega by locating the IAOR. अब IAOR in simple words is basically this is the instantaneous axis of rotation. So this is basically that point जिसका velocity 0 है, जिसके about the body can be assumed to be rotating. It may or may not lie on the actual body. Okay, but it's that point
जिसके अबाउट यू कैन विजुअलाइज दिस बॉडी टू बी मूविंग एंड दिस पॉइंट का बेसिकली वेलोसिटी 0 है. तो IOR निकालने का बहुत सिंपल सा ट्रिक है. You know, it's basically like finding the center of a circle. So you have one point जिसका velocity ऐसा है, you have another point जिसका velocity ऐसा है. All you need to do is you need to draw perpendiculars from both points. Perpendicular क्या? Velocity के perpendicular वाला एक line draw कर लो. So what we are attempting to draw is the radius. है ना? Velocity तो tangent के along होता है, तो पीला line radius हो गया. यहाँ पे भी velocity के perpendicular line draw किया, ये radius हो गया. Of the points where the radii meet are is the center. So that becomes the center. So that becomes the point about which these objects appear to be moving in this particular frame. तो वो फंडा लगा के can we figure out कि यार इसका axis of rotation कहाँ पे lie करेगा? If imagine this is the origin of the coordinate system. कहाँ पे lie करेगा? X, y के terms में कहाँ पे lie करेगा? And उससे ओमेगा निकाल दो. L/2 सही नहीं है. ओरिजिन भी सही नहीं है एक्चुअली. ओरिजिन भी आंसर नहीं है. Anyone? One more attempt. Try the step. Velocities. तो ये रॉड के कोई भी दो पॉइंट्स जिनका वेलोसिटी एटलीस्ट अच्छे से पता हो. ऐसे कोई भी दो पॉइंट्स उठाओ. एक्सक्यूज मी. Yash, it seems correct, but I think you've taken theta as 45. If you should rightly answer just in terms of theta. Seems like पृथ्वी. हाँ, again तेरा भी सही है. शायद थीटा तुम 45 ले रहे हो, बट ये आंसर थीटा पे डिपेंड करेगा. So it depends on whatever the angle is. The idea is, देखो क्या करना है. ये पॉइंट फॉर श्योर इसका वेलोसिटी राइट की तरफ, बिकॉज दिस पॉइंट इज स्लाइडिंग ऑन द फ्लोर, तो इट हैज टू मूव इन दैट डायरेक्शन, राइट. सो इस पॉइंट का वेलोसिटी फॉर श्योर राइट की तरफ है. दिस गाय इज मेंटेनिंग कांटेक्ट विद द वॉल. इसका वेलोसिटी फॉर श्योर डाउनवर्ड्स है. तो ऐसे दो पॉइंट्स इनका वेलोसिटी यू नो फॉर श्योर उठा लो, फिर उनके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो उसी पॉइंट से, बट किसके परपेंडिकुलर? वेलोसिटी वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर. ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया और फिर ये इसके लिए ड्रॉ किया. सॉरी, एक्सक्यूज मी. एक इसके लिए ड्रॉ किया, एक उसके लिए ड्रॉ किया. द पॉइंट वेयर दे मीट becomes the center of rotation. So this is the instantaneous axis of rotation in this frame. That is the IOR. और इसको instantaneous बोलते हैं because that may not always be there. Naturally, if this rod is going to take a new position, the new position of the IOR will be over here. So IOR भी move कर रहा है. The location of that point is changing, but that point at this instant is at rest. Okay? So, or that is the temporary center of rotation for these guys. तो IOR locate अगर कर लिया तो उससे फिर ओमेगा भी easily आ जाएगा, because this is like the center of the circle. ठीक है, ये distance L by rather L sin theta हो गया ये distance. This is behaving like the radius for this guy. So we know the velocity, we know the radius.
and that should give us omega. So omega is actually v by radius, so v by L sine theta. Correct. So that's how you find your instantaneous axis of rotation. अब इसमें एक situation ऐसा है कि what if that instantaneous, what if those lines coincide? So for instance, take a rod like this. इसका velocity 10 meters per second है और इसका velocity इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड और ये रॉड का लेंथ 2 meters है. So where is the IOR and what is omega in this case? This is of course another way to find omega is maybe, but at least where is the IOR? Anyone? Yeah, ले लो. Yes, yes, perfect. Yes, yes. 2 by 3 नहीं, sorry, 2 by 3 meters नहीं है. ये मैं बता देता हूँ, then you guys can try the next one as well. तो यार इसमें actually the problem was as I draw a perpendicular to this guy and I try to draw perpendicular to this lower point as well, those two perpendiculars end up coinciding. So unlike the previous case, we do not get a point of intersection. This entire line is a line of intersection. मतलब क्या? मतलब center ये line पे कहीं पे भी हो सकता है. We don't know. The only thing is we do know कि center का velocity is 0. Okay. Center का velocity is 0. So now we do know कि if this is therefore like a radius, कोई भी circular motion में as you move along the center along a radius and body अगर मान ली घूम रहा है तो तुम सेंटर से जितना दूर रहोगे उतना ज्यादा वेलोसिटी दिखेगा, सेंटर पे 0 दिखेगा और फिर सेंटर क्रॉस करोगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा और दूर जाते जाओगे तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ते जाएगा. राइट, दैट्स व्हाट यू डू ऑब्जर्व. सो लुकिंग एट द फैक्ट कि यहाँ से यहाँ वेलोसिटी 10 से 5 गिरा है, okay, that means I am moving towards the center and I should probably continue moving along this direction to finally find the point जहाँ पे that velocity dips to 0. So 10 से 5 से 0. 0 कब आएगा? यहाँ से यहाँ में 2 मीटर नीचे गया तो वेलोसिटी 5 से कम हुआ. पूरा लीनियर रिश्ता होता है वेलोसिटी और आर के बीच में. तो और 2 मीटर नीचे जाएंगे तो वेलोसिटी वापस 5 से कम होके 0 हो जाएगा. So this is where the instantaneous axis of rotation lies, 2 meters below that object. Okay. And therefore क्या बोलने वाला था मैं? हाँ, और ओमेगा तो फिर ओमेगा इज कोई भी एक पॉइंट ले लो, पॉइंट का वेलोसिटी बाय डिस्टेंस, तो ओमेगा इज 5/2.
5/2 ले लो या 10/4 ले लो, 10/4, या एक दूसरा तरीका होता है रिलेटिव, इनका रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर के अलॉन्ग और अपॉन डिस्टेंस, तो वहां पे भी 5/2 दिखेगा, रिलेटिव वेलोसिटी 10 - 5 by the distance between the points, 5/2, ठीक है. So I hope you got the idea. एक last वाला just, so that's the IOR. I'll quickly just mention why is the IOR a big deal, ठीक है. तो हर बार ऐसा IOR निकालने में बड़ा चैलेंज नहीं होता है, बट IOR को इन अ वे लोकेट करना इम्पोर्टेंट होता है. तो let's just say 10, 15 and let's say this is a 20 meter long rod, 20 meter long rod. Okay, so where does the IOR click? Yes, Rugved, very nice. Okay, so basically इसमें since, yes यश सही है, तो इसमें क्या है, since we can see the velocity change direction, the first step तो of course perpendicular draw करेंगे. वो ड्रॉ करने में इस बार अनफॉर्चुनेटली दिख रहा है कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द एंटायर थिंग इज अ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन. सेंटर कहीं पे भी लाइन लाई कर सकता है, बट देन noticing how as I go from 10 to 15, from the topmost point to the lowest point, my velocity is changing direction. That tells me that the center of the circle or rotation or the IOR basically has to be somewhere between this 10 and 15, between the top most and the lowest point, right? It has to lie somewhere in between, because फिर वो पॉइंट तक, सॉरी, वो पॉइंट तक जाते जाते वेलोसिटी 10 से 0 तक गिरेगा और फिर उसको क्रॉस करके फिर 0 से 15 तक राइज करेगा. सो दैट्स इट, दैट यू जस्ट नीड टू लोकेट वेयर इट इज. कैसे भी कर सकते हो, सिमिलर ट्राई कुछ भी कर सकते हो. इनफैक्ट आई यूज सिमिलर ट्रायंगल्स. आई कैन से कि अच्छा ये 10 है, ये 15 है, मतलब इनका रेशियो 2:3 है, तो यहाँ पे भी रेशियो 2:3 होना चाहिए. तो 20 को 2:3 के रेशियो में बांट दो, दैट गिव्स यू 8 and 12. ठीक है, या तुम बोल सकते हो वेलोसिटी नीचे जाते हुए 25 से बढ़ गया लेफ्ट की तरफ, 20 नीचे जाओ तो 25 बढ़ेगा, 20 नीचे जाओ तो 25 से लेफ्ट की तरफ बढ़ेगा, तो 8 नीचे जाओ
तो 10 से लेफ्ट की तरफ बढ़ के ये गायब हो जाएगा। थोड़ा बेसिकली रेशियो प्रोपोर्शन का ही खेल है, but you can figure out that. Now that is locating the IOR. I think more important than all of that is understanding what place does this particular axis have in your formula. So one very important thing, kinetic energy of a rigid body. Okay, kinetic energy of a rigid body, irrespective of what it is doing, not breaking this into any cases. Any rigid body ka kinetic energy can be, if it's rotating or translating or doing both, can always be written as half I about the IAOR omega square. If it's rotating or rotating plus translating, the kinetic energy of a rigid body can always be written like this: half I about the instantaneous axis of rotation omega square. Okay, this same thing, this same one single term can be written as two terms. So that just comes from parallel axis theorem. तुम IAOR को ICM plus MR square लिख सकते हो, जिसके कारण एक टर्म हो जाएगा हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, एंड फिर दूसरा टर्म हो जाएगा हाफ M R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, जिसको लिखेंगे VCM स्क्वायर. ठीक है, this same first term is split into two terms. इसका नाम, this is just the way of giving it a name, this is just called as rotational kinetic energy. This is just labeled as translational kinetic energy. Okay, but more than all of that, the basic idea is that when a body is rotating or translating, doing a mixture of the two, basically you could write its kinetic energies using either of these two formulas, ये या ये, और ये क्लैरिटी रहना चाहिए. ठीक है, अगर तुम IOR का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करोगे, you should not try to write this term. This first term in itself is complete. But अगर तुम ICM यूज करोगे, then you'll have to include this term as well. अब ये कब यूज करोगे? That's probably you would use that if you don't know where the IOR is. अगर ठीक से पता नहीं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर है, या लोकेट करने में तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना है, तब तुम इसे यूज करोगे. जैसे रोलिंग प्लस स्लिपिंग वगैरह में you would use this. Okay, when it's rolling and slipping, you'd use this because you at least know that the lowest point is moving. It's not at rest. So you know that the IOR is not over there. Okay, so you'd use this. Whereas on the other hand, this when you do know where the IOR is, this is a good choice. So where do you know what are places you know where the IOR is? So for example, pure rolling में पता होता है. Pure rolling में lowest point का velocity is 0. That is your IOR. फिर whenever a rod is rotating about a hinge, किधर भी fixed हो, जिसके about rotate कर रहा है वो hinge है, वो उसका velocity 0 है, that is the IOR. ठीक है, तो wherever the velocity is 0, that is your instantaneous axis of rotation. तो उसके about I अगर निकाल सकते हो easily, then you can just use the first form. Else you'll have to use the second form. But both are the same, and they are related to each other by parallel axis theorem. Okay, so have I cleared doubts related to the IOR? जिसने भी पूछा था. And before proceeding further, वो hole in wedge question देखते हैं. Actually बहुत easy है यार ये hole in wedge question. It has nothing to do with rotational motion. Nothing to do with it. In fact, थोड़ा मैंने अभी based on one of the examples I took, can everyone just see that the question is on the doubt group? एक बार देख लो. Have a look at that question. So just take maybe like 2 to 3 minutes. Try out the question. It's very simple. It's not on rotational mechanics. थोड़ा ऐसा रोलिंग वर्ड देख के डरो मत. जेई का क्वेश्चन देख के डरो मत. Just because जेई का है, that does not mean these things are difficult. Try कर लो.
So maybe the basic explanation involves little rotational motion, but otherwise it's a result, very fairly obvious result. Can somebody think and tell ये पहले तो गिर क्यों नहीं रहा है? For smaller angles, why isn't it falling? What is preventing it from falling? What is at play? Basically, for smaller angles, let's say our center of mass is, so क्या सीन हो रहा है? Yes, Rugved, over the whole. Okay, but yeah, I think I've understood what you're trying to say. हाँ, acceleration of center of mass is g sin theta. नहीं, ये तो है ही नहीं. अच्छा, क्यों? पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखो. क्यों नहीं है g sin theta acceleration of center of mass? चलो mg sin theta का फोर्स है, but then this guy is there, no? ये कुछ तो कर रहा है, ये रोक रहा है उसको. So acceleration of the center of mass is not going to be g sin theta. Um, this is not a simple block sliding down an incline. I think there are forces involved. Even once it starts rolling, its acceleration will not be g sin theta. If my guess is there'll be friction and all. So वो नहीं है, and that's not relevant. One of you saying, sir, जब mg sin theta का torque is bigger than mg cos theta का torque. अब yes, नेट फोर्स तो जीरो है. जब तक ये हिलेगा नहीं, नेट फोर्स जीरो है ना. that's what the question means. वो बॉल को उस होल के अंदर रखा था, ठीक है, and the ball was in that hole comfortably. Then we started increasing the incline. एक point के बाद the ball rolled off the hole. It did not stay in that hole. Okay? The hole is smaller than the radius of the size of the ball. तो एक point के बाद, एक angle level of steepness के बाद the ball came off. तो तब तक वो रेस्ट पे है. तो ये प्योरली मतलब इक्विलिब्रियम का सवाल है. दिस इज नथिंग टू डू विद एक्सेलरेशन. गॉट इट? अब वन ऑफ यू सेइंग कि सर mg sin थीटा का टॉर्क जब mg cos थीटा के टॉर्क से बड़ा रहेगा. ओके, दैट्स फेयर इनफ. mg sin थीटा का टॉर्क जब mg cos थीटा के टॉर्क से बड़ा रहेगा, तब वो निकलेगा. दैट्स करेक्ट. बट माय पॉइंट इज, तुम वैसे भी मत सोचो. डोंट थिंक लाइक दैट. Because हो सकता है while thinking like that, you may just make it lengthier than it actually is. It's a far simpler concept. Gravity को दो पार्ट में ब्रेक करने के जगह gravity को एक साथ ही ले लो. Don't split into two parts. Just draw your gravitational force, and that will tell you everything that is really going on over here. ये है मेरा gravitational force. Can you tell me, is the ball in this diagram, is it going to slide off? Is it going to roll off the incline, or is it not going to roll off the incline? ऐसे diagram. No. है ना? क्यों नहीं? क्योंकि gravity कर क्या रहा है इस ओरिएंटेशन में? ऐसा घुमा रहा है. ग्रेविटी का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, दबा रहा है, होल के अंदर दबा रहा है. तो बॉल विल बी स्टेबल. ऑन द अदर हैंड, जब, तो अब थोड़ा सोचो लिमिटिंग कंडीशन क्या है. ऑन द अदर हैंड, जब सीन ऐसा दिखेगा, मान लो सेंटर ऑफ मास अब इधर है. अगेन डोंट थिंक mg sin थीटा mg को, सिंपली देखो ग्रेविटी का टॉर्क इस सिचुएशन में क्या होगा. इज इट trying to keep the ball inside the hole, or is it going to cause the ball to roll off the hole?
roll off. So what's the idea फिर? What is that limiting condition? जब hold on, don't try to equate things. Torque due to gravity is torque due to normal. नहीं यार, कुछ solve करना नहीं है, तुम आगे आगे jump कर रहे हो. Don't miss the main point. इसमें torque equation ही नहीं लिखना है. You just need to understand when will this lose stability, when will this fall off. सिर्फ वहां तक मैं टॉर्क यूज करूंगा, उसके आगे कुछ जरूरत ही नहीं है इसका. पॉइंट क्या है, ट्रेंड क्या दिखा? जब ग्रेविटेशन जब सेंटर ऑफ मास होल के लेफ्ट के तरफ था, सॉरी, आई डोंट ड्रॉ एनीथिंग अदर्स, आई कांट यूज दिस रीडू एरोज, बट होल नहीं, जो मैंने हाईलाइटेड ग्रीन पॉइंट यूज किया है, ठीक है, दैट इज द पॉइंट अबाउट विच इट कुड रोटेट एंड रोल ऑफ. ओके, दैट इज द पॉइंट जिसके बाद रोटेट कर सकता है. आई विल कॉल दैट पॉइंट एज द एक्सिस, जो नीचे मैंने ग्रीन हाईलाइट किया है. जब सेंटर ऑफ मास एक्सिस के लेफ्ट में है, गिरेगा नहीं. जब सेंटर ऑफ मास एक्सिस के राइट में है, गिरेगा. सो ऑब्वियसली दैट क्रिटिकल कंडीशन व्हेन इट्स जस्ट गोना फॉल, यहाँ पे ग्रेविटी गिरा रहा है, वहां पे ग्रेविटी गिरने से रोक रहा है. ठीक है. So obviously that critical condition when it just falls is when the center of mass lies directly above the axis. ठीक है. उस condition में this is going to roll. That's how you approach these questions. जब center mass directly axis के above lie करेगा ना, तब critical condition आएगा. This was very similar to me talking about that toppling वाला question. When I said कि गाड़ी के लिए पूरा टॉपल होने के लिए क्रिटिकल कंडीशन क्या है? सेंटर ऑफ मास को ये लाइन के पर, ये एक्सिस के ऊपर आना चाहिए. दैट इज अ क्रिटिकल कंडीशन. एक बार वो क्रॉस हुआ, ऑटोमेटिकली गिरेगा. यही सीन है. हम भी इस इंक्लाइन को तब तक उठाएंगे जब तक बॉल का सेंटर ऑफ मास इसके वर्टिकली ऊपर आ जाता है. ओके, बॉल का सेंटर मास जब इसके वर्टिकली ऊपर आ गया, फिर उसके आगे वो डेफिनेटली गिरेगा. फिर ये एक ज्योमेट्री का सवाल हो गया. ठीक है, इसके आगे ज्योमेट्री का सवाल हो गया. I will upload the lecture. I'll send you guys the lectures. I mean, I'll send it to you via, or I'll post it in the doubt group. ठीक है, ये R हो जाएगा और ये छोटा r, and you can do the rest is just geometry. तो इसके आगे बस geometry है. But this concept is like quite common. ये तुम समझ लो. I mean, get a feel of that. This is actually a point of unstable equilibrium. सेंटर मास ये पॉइंट हाई है ना, ये हाईएस्ट पॉइंट है सेंटर मास के लिए. सेंटर मास के दूर जाने की कोशिश करेगा. जब सेंटर मास को इधर रखोगे तो ऐसा गिरेगा, और सेंटर मास को उधर रखोगे तो वैसा गिरेगा. दैट्स अ पॉइंट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. इफ यू क्रॉस दैट पॉइंट, इट विल ऑटोमेटिकली फॉल डाउन. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. और फिर कभी कभी तुमने ऐसे कंसेप्ट देखा होगा कि वन एल शेप रॉड इज हैंगिंग. व्हेन इट हैंग्स, व्हाट इज द एंगल दिस मेक्स द वर्टिकल. सब वापस वही फंडा है. तब क्या है? center of mass will be in the position of stable equilibrium. Center mass must be vertically below the suspension point. If left to itself, it will try to come to that position. Okay? So that is very important. Center of mass जब वो line के just ऊपर या just नीचे होता है, just नीचे होता है ना, that's a stable equilibrium position. Anything hanging will come to that orientation. जब ऊपर होता है, that's an unstable equilibrium position. यहाँ से वहां लेना है बॉडी को, तो तुम्हें वो पोजीशन क्रॉस करना पड़ेगा. I hope you got it. This इसके आगे सिंपल है. ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये दोबारा थीटा हो जाता है. एंड यू कैन सी साइन थीटा इज स्मॉल r बाय कैपिटल. इट्स जस्ट अ ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन ऑफ this. Okay. Yes. Whenever, तो one of you saying, sir, I'll just post that for the rest.
of you. He's saying when gravity is present, center mass जब lowest होगा तब stable equilibrium होगा, जब highest होगा unstable होगा. बिल्कुल. And especially if there is a talk of the center mass being free to rotate about a point, है ना, तो center mass typically एक circular path follow करने की बात करेंगे about some axis of rotation, right? It may not be the full circle, may just be a small part of the circle, but either way, just below, directly below that point of suspension, lowest point पे stable equilibrium होगा, directly above that point of suspension, highest point पे unstable equilibrium होगा. तो ये गोल, सेंटर मास का गोल इन लाइफ इज टू गो लोअर, जितना नीचे जा सकता है, जितना अर्थ के पास जा सकता है उतना अच्छा. उसके हाईएस्ट पॉइंट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. इसको यहाँ पे छोड़ोगे ना ऐसा, दिस इज अनस्टेबल. ना ही लेफ्ट ना राइट, मतलब फिलहाल इक्विलिब्रियम है, बट उसको हल्का सा भी डिस्टर्ब करोगे लेफ्ट या राइट की तरफ, इट वुड वांट टू गो इन आइदर डायरेक्शन. अलग बात है कि यहाँ पे देयर इज दैट सरफेस प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम रोटेटिंग, ओके, बट हैड दैट सरफेस नॉट बीन देयर, बॉल ऐसा रोटेट करता. थोड़ा सा डिस्टर्बेंस राइट को दोगे, ये रोटेट करेगा राइट की तरफ. सो पहले हमेशा लेफ्ट पे था ना. इफ यू वांटेड टू गो टू द राइट, यू विल हैव टू क्रॉस दिस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन. दैट्स द आइडिया. हिल के तरह है, सेंटर ऑफ मास, यू विल हैव टू टेक इट ओवर द हिल फॉर इट टू गो टू द अदर साइड. ओके, ऑलराइट. रोटेशन प्लस SHM. So rotation plus SHM, let's take one. Okay, so let's take a question like this. Maybe this is K, and maybe this is also K. Okay, let's say this is a cylinder. Okay, cylinder का mass दिया है, radius दिया है, and we want time period, find time period. Sorry. Okay, हाँ, तो इसमें it's given कि of course this is a rolling, there is enough friction to ensure there is pure rolling. There is enough friction to ensure pure rolling. ठीक है, हो सकती है. कैसे करेंगे इससे? So one of the best ways you could do this, I mean there are several approaches. Very nice, perfect. टॉर्क अबाउट बॉटम मोस्ट पॉइंट लिख के उसको डी थीटा से कंपेयर कर लो. दैट इज द एब्सोल्यूट बेस्ट वे. ये इसको बोलते हैं ना IAOR. ये अपना IAOR है, राइट? सो दैट्स द बेस्ट वे टू डू इट. टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो जाएगा, इन द सेंस मुश्किल एज इन मतलब विल नॉट बी द वाइजेस्ट वे टू डू. क्यों? तब फिर फ्रिक्शन लिखना पड़ेगा, एंड फ्रिक्शन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा लिखना पड़ेगा. ठीक है, those are things you do when you want to challenge yourself, but those are not things you do in the exam. Okay, so torque about center of mass wala method is not the best. Center of mass ka motion is also again not the best. It is a linear SHM, but फिर वापस उसके acceleration में नीचे वाला friction आएगा. So the best way we can avoid friction completely is by applying torque about the lowest point. And basically pure rolling में you could always apply torque about the lowest point. Energy method, चलो देख लेते हैं energy method, but I would still say, I mean, energy method is again for those who, be very attentive, very who
can concentrate and not mess up anywhere. This, trust me, this is easier. Energy method दिखा देता हूँ, but I'll show you both methods and you guys decide for yourself. तो हम बस simple सा ऐसा कर रहे हैं, treat this as though this is a body rotating about the lowest point. Simple सी बात. It's just the body rotating about the lowest point. Okay? अच्छा, कितने से रोटेट कराएंगे? चलो मान लो इसको हम थीटा से रोटेट कराते, थीटा से डी थीटा हो गया बेसिकली, छोटा सा अमाउंट, मैं थीटा लिख रहा हूँ, छोटा सा एंगल थीटा से रोटेट करा दिया राइट की तरफ. ओके अच्छा, ये रोटेशन के कारण पहले तो ये पॉइंट कितना मूव हुआ है ना, तो दैट्स फेयरली सिंपल, दैट पॉइंट हैज मूव्ड बाय, अच्छा इसका रेडियस है r, so this has moved by r theta and ये वाला point has moved by 2r theta. Okay, so how have the points moved, springs का ends how have they moved वो लिखा है. अब यहाँ से फोर्स पे आ जाओ, तो ये वाला स्प्रिंग r theta से स्ट्रेच हुआ, it doesn't like being stretched, तो it will pull back with the force of kr theta. फोर्स मैंने ड्रॉ किया ब्लू में. ऊपर वाला स्प्रिंग has been compressed, it doesn't like being compressed, so it pushes out by a force of k times 2r theta. Okay, now दो फोर्स लग रहा है, दोनों के कारण टॉर्क अबाउट द लोवेस्ट पॉइंट निकाल सकते हैं. तो व्हाट इज टॉर्क अबाउट द लोवेस्ट पॉइंट, व्हाट इज टॉर्क अबाउट द IAOR? सो kr theta into the lever arm, and this lever arm is r. So torque above the lowest point is k r theta r clockwise. ठीक है, k r theta r, and वो वाला हो जाएगा k 2r theta फोर्स इनटू लीवर आर्म. लीवर आर्म कितना है? 2r. और बाद में मेरे को माइनस साइन डालना है तो माइनस साइन डाल दूंगा. टेक्निकली ये थीटा, टेक्निकली दिस इज विद द माइनस साइन, तो इसमें लिखते रहता माइनस. थीटा इज clockwise but the torque is anti-clockwise. So finally if you want to write this torque in terms of theta, this becomes negative of, ये कितना है kr square और ये है 4 kr square, मतलब मिलके 5 kr square minus 5 kr square theta. But if you want to, you know, if you don't have to present this anywhere, if this is your rough work, you can leave the minus sign and all out. Okay? Basically 5 kr square theta opposite theta, that's a torque. Alpha is torque about IOR. By the way, please bear in mind this equation does not randomly work for any axis. It only works for the center of mass and an inertial axis of rotation. In pure rolling, you can apply pure rolling itself, you can apply it above the lowest point. You cannot apply it above any random point. ठीक है, तो टॉर्क में भी दो ही ऑप्शन था, या तो सेंटर ऑफ मास के लिए लिख सकते हैं अल्फा इज टॉर्क बाय आई, या प्योर रोलिंग में लोवेस्ट पॉइंट के अबाउट भी लिख सकते हैं अल्फा इज टॉर्क बाय. ओके, सो यहाँ पे फिलहाल लिख रहे हैं अबाउट द लोवेस्ट पॉइंट, तो अल्फा इज माइनस 5 kr स्क्वायर थीटा अपॉन आई अबाउट द लोवेस्ट पॉइंट. तो ये क्या सिलेंडर है, 3/2 mr स्क्वायर आ जाएगा. And right now that's it, you have alpha in terms of theta. R square कट जाएगा, that's it. Yeah, so 10k/3m. वहां से टाइम पीरियड आ. This is how you would do it. ठीक है, एनर्जी मेथड भी दिखा देता हूँ, बट फिलहाल एनी डाउट इन दिस मेथड? No. You know, energy method requires you to be like really careful with variables and very sometimes it may require you to be very good at constraints. And I would say only use the energy method if you know you're not able to apply, you're not able to write a torque equation.
You're not able to apply force equation. Okay, but honestly, like the kind of examples we are seeing, these are all very standard examples. If you're not able to write a torque equation, then you'll have to work on that a little bit more. ये नहीं है कि इसमें टॉर्क इक्वेशन डिफिकल्ट है, शायद लिखना नहीं, कैसे लिखते हैं वो पता नहीं, you'll have to practice that a little bit. बट जहाँ पे अगर सच में अगर मुश्किल for some reason होगा या तुमसे हो नहीं रहा है, then maybe the energy method would be could help you. ठीक है, but basically it's for that, it's when you're when it's difficult to write that torque equation in the first place. तो यहाँ पे जैसे मैं क्या करूँगा, I'll just say कि let's say this guy, इसका एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ओमेगा है, और लेट्स से इसमें एक्सटेंशन x1 है, एक्सटेंशन x1, और इसमें भी कंप्रेशन x2. Yeah, in order to not confuse you, let me keep both as extensions. Okay, both are extensions. Okay. Okay. अच्छा, तो अब energy क्या है? What is the energy of the system? So half k x1 square is one spring, half k x2 square is the other spring, and then kinetic energy of the rolling disk. And as we just said, kinetic energy of any moving body, तुम्हें बड़ा term लिखना है तो you'll have to write half ICM omega square plus half MVCM square. But यहाँ पे since we know the IOR, it is wiser to use that. तो उसमें निपट जाएगा half I about IOR omega square. That's it. No more terms needed. If you write this, you don't need to write the VCM वाला term if you use IOR. Okay. अच्छा, is something, but is basically a constant. तो इसको differentiate करोगे तो you get 0. अब differentiate करने में half के बार लेने दो, x1 square हो जाएगा 2x1, फिर dx1 by dt is v1. ओके, अब v1 को देखो कैसे लिख रहा हूँ, v1 को, so you'll have to be careful. अच्छा, v1 dx1 by dt is rate of increase in x1, मतलब v1 ये डायरेक्शन में, ठीक है. एंड एक काम करता हूँ, मैं v2 को ऐसा लेबल कर लेता हूँ, ये v2 है. सो नेक्स्ट वाला जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हाफ के x2 स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x2 dx2 by dt. अब x2 is not increasing at the rate of v2, it's decreasing at the rate of v2, तो ये हो जाएगा माइनस v2. और फिर हाफ I about IOR which is 3 by 2 mr square, ओमेगा स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 ओमेगा एंड देन अल्फा. अल्फा क्लॉकवाइज सेंस, क्लॉकवाइज सेंस. ठीक है, अब इसमें these terms would ideally cancel. ओमेगा v1 v2 के बीच में कुछ तो रिश्ता है. तो क्या रिश्ता है? v1 could be, if you apply constraints, v1 is r omega. Notice the direction has to also be correct. Omega clockwise है, v1 in this case right की तरफ है, तो v1 can perfectly be written as r omega. v2 also can be written as, but this one can be written as 2r omega. And mind you, अगर v2 को ऐसा लेते थे then we'd have to write minus 2r omega. But फिलहाल omega के direction में लिखा है, ठीक है, तो v2 is simply 2r omega. So now when you substitute these things in, so let's say I'm cancelling v2 and writing that, and I'm cancelling v1 and writing this, then you can also cancel out omega. From all these terms. Okay. ये 2 2 कटेगा,
वो बेसिकली यहाँ से आ जाए. I'll just check it once more. हाफ के 2x1 x1 का डेरिवेटिव v1, x1 x2 के बीच में भी रिश्ता लिखना बाकी है. हाँ, अब x1 x2, so maybe I'll just before messing this up, नहीं इतना रहने दो, ये 2's कैंसिल किया है. So I have k x1 r, I have k x2 2r, and I have 3/2 mr square alpha. Okay, so k x1 r, k x2 2r, and 3/2 mr square alpha. फिर एक और कंस्ट्रेंट बाकी है, वो है अब x1 को थीटा के टर्म्स में लिखना. Okay, so from the diagram here again we'll have to be careful. This is I would say this is a method for those who can be very careful. Okay, so x1 अब थीटा इसी सेंस में लेंगे. okay? तो थीटा into r is x1. Remember this is an extension, so x1 is towards the right. So x1 is r theta, that's fine. x2 was again an extension. Yeah, so x2 is towards the left. तो x2 हो जाएगा -2r theta, -2r theta. Because ठीक है, तो फिर वो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. This is r theta. This is, I'm just giving you guys a gist of it. Okay? But as you can see, I mean, this is not always going to really be the swiftest method. This method is if you absolutely cannot write the equation. And the chances are, तो यहाँ पे भी एक माइनस साइन था, फिर दो माइनस साइन था, जिसके कारण this becomes 5k theta. हाँ, 5k theta is minus. So the thing is, I mean, सिर्फ तभी जब है ना मुश्किल है, लिखना ही मुश्किल है इक्वेशन. ये तो काफी डायरेक्टली आया था टॉर्क अबाउट लोएस्ट पॉइंट्स. वो लिखना मुश्किल है तब तुम इसको यूज कर सकते हो. The chances are if you find writing the torque equation difficult, you would ideally find this even more difficult, because as you can see just writing energy is fine. Energy लिखा वो ठीक है. But then all of this, you know, keeping track of the constraints, ये dx by dt क्या है? वेलोसिटी है, बट किस डायरेक्शन का वेलोसिटी? तुमने जो लेबल किया है उसके हिसाब से v1 लेंगे या -v2 लेंगे. फिर कंस्ट्रेंट्स में v को r थीटा लेंगे, r ओमेगा लेंगे या -r ओमेगा. So that makes it a little complex. I would say कि in hindsight maybe it would have been best had I taken x2 also towards the right. But at least उसमें वो माइनस ही दिखता ही नहीं. I could have written this as a compression. Then all terms would have been towards the right and there would have been no minus sign. Okay, I hope you got the idea. 8 minutes to go. Maybe we can try out one question. चलो ये क्वेश्चन देखते हैं. Actually मैं एक चीज करता हूँ. I want to solve one question. एक question I'll solve and then I'll give you one question to solve and then you can see the similarity. Or you can see what we can learn from it. Okay? Just because we're short on time. So एक जल्दी से एक example, एक question as an example I'll just show you. You might have seen this question. एक rod है और यहाँ पे हो सकता है एक spring है. There could be more springs वगैरह. This just ठीक है, just adding to the complexity slightly, but basic concept मान लो ऐसा एक rod है जिसका mass is m and length is l. Okay, and it said कि equilibrium position में rod ऐसा है. Okay, and we are asked time period. Okay, simple idea. But now
इसमें there are some things we could waste time doing. If you just remember what we had discussed during SHM, saying time period के लिए you don't need to sit and find the equilibrium position. Equilibrium position में spring कितना compressed है वो सब निकालने का जरूरत नहीं, ठीक है, वो सब निकालने का जरूरत नहीं है. The fact is this is already in equilibrium. मतलब ऑलरेडी कुछ कुछ हो रहा है. क्या क्या हो रहा होगा? ग्रेविटी का कुछ टॉर्क होगा, है ना, एक ग्रेविटी का टॉर्क होगा which we can understand is rotating the body like this. और फिर और क्या होगा? अच्छा, स्प्रिंग का टॉर्क होगा which we can understand is rotating the body like this. तो already these torques are there, but इन सब के होने के बाद what do we have? We have equilibrium. So these torques are cancelling each other out. Now इसके आगे अगर मैं किसी को हल्का सा डिस्प्लेस करूंगा तो फॉर, है ना, if I displace the rod slightly, then all I now all I care about is the change in the torques, the change in gravity ka torque and change in spring ka torque. That's all I care about. Change in gravity ka torque and change in spring ka torque, right? अब think about this, gravity का torque in this horizontal position, ये horizontal position में होने के कारण जब मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करूंगा, अच्छा किस डायरेक्शन में, मान लो हम ऊपर की तरफ रोटेट कराते हैं इसको, ठीक है, ऐसा रोटेट कराएंगे मान लो, तो इसके ये छोटा सा रोटेशन के कारण फिलहाल सेंटर ऑफ मास टेंजेंशियली मूव करेगा, मतलब सेंटर ऑफ मास ऊपर मूव करेगा. कितना मूव करेगा? आर थीटा से मूव करेगा, आर एज इन इधर L/2 थीटा से मूव करेगा, ठीक है. और यहाँ पे कितना से, कितने से? L थीटा से, सॉरी यहाँ पे L थीटा से. बट नोटिस कि अब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का लीवर आर्म, ग्रेविटी का लीवर आर्म चेंज नहीं हुआ है. ग्रेविटी का लीवर आर्म इस पोजीशन में चेंज होते हुए दिख नहीं रहा है, जिसके कारण देयर इज नो चेंज इन टॉर्क. एक्चुअली meant torque, there's no change in torque due to gravity, there's no change in torque due to gravity, right? Because क्यों? लीवर आर्म चेंज नहीं हुआ है, फोर्स उतना ही है, लीवर आर्म भी मतलब डिस्टेंस भी उतना ही है. तो there is no change in torque due to gravity, but there's only a change in torque due to the spring. कितना सा वो चेंज है? तो स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ L थीटा से, सॉरी अगेन, जिसके कारण फोर्स आया के L थीटा पीछे की तरफ, फोर्स इनटू लीवर आर्म के L थीटा इनटू L, दैट इज द टॉर्क ड्यू टू द स्प्रिंग, जिसके कारण देयर इज एन टॉर्क इज I अल्फा, है ना, so टॉर्क इज I अल्फा. सो दिस इज, अब ये टॉर्क किसके अबाउट? इस एक्सिस के अबाउट, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पता है तो उसके अबाउट ही लिखो. Okay, that avoids torque from the hinge. The torque about the hinge. Torque is I. We know rod के लिए ml square by 3 होता है alpha. We now have alpha in terms of theta. ठीक है? And minus sign आएगा because alpha and theta का direction होता है. Alpha is theta clockwise. ये समझ में आया? I'll give you a quick follow-up question. वैसा ही but अब मैं rod को vertical रखने वाला. Could you find the time period for that? And that's our last question for today. Rod is vertical. Can you find the time period for this?
कुछ आ रहा है इसका टाइम पीरियड हिंज फ्रॉम द टॉप. Yes, Deepak, sure. I'll be sending the recording. I'll just send you the link on the group. So again, given equilibrium, we had torque due to gravity and torque due to the spring. They were cancelling out, है ना? ये इक्विलिब्रियम है. तो इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचा वो सोचना नहीं है. इसके आगे चेंजेस किसके कारण आएगा. So there can be a change in torque due to gravity and change in torque due to the spring changes, है ना. अब torque due to the spring में actually बड़ा challenge नहीं है. That's very similar to what we did. Very nice, Yash. We'll just cross check. ठीक है, cool. Most probably you could be right. Yep, so we'll just cross check. तो मान लो ये ऐसा थीटा से रोटेट करता है जिसके कारण सेंटर L/2 थीटा से बाहर आएगा राइट की तरफ और ये L थीटा से राइट की तरफ जाएगा. These are all exaggerated drawings. Theta is very small. Change in torque with the spring is not a big deal because we can see the spring will push by KL theta, and therefore this is in addition to whatever it was doing. Agar compressed tha, extended tha, whatever. In addition, on top of that, the change is KL theta towards the left, जिसके कारण there is a KL theta into L. इतना torque है anti-clockwise, sorry, clockwise direction में. KL theta into lever arm, इतना torque spring लगाएगा extra because of a sudden rotation of theta. Now gravity के कारण तब मैंने बताया था कि there's no change in gravitational torque when the rod was horizontal. Vertical में क्या scene है? So simple, just try to draw the new position of the center of mass, which we are seeing is L/2 theta towards the right, जिसके कारण gravity का torque has changed. कितने से? पहले mg का torque 0 था, अब लीवर आर्म आ गया है about that point. कितना है लीवर आर्म? ये है L/2 theta. So change in gravitational torque is mg into change in lever arm. Lever arm is actually moved towards the right by L/2 theta. तो mg L/2 theta इतना ग्रेविटेशनल टॉर्क में चेंज आ रहा है और ये भी इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है. ये टॉर्क भी उसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है. So this time the center of mass is moving horizontally, जिसके कारण ग्रेविटी में चेंज इन टॉर्क आ रहा था. पिछले क्वेश्चन में द सेंटर ऑफ मास वाज मूविंग वर्टिकली, जिसके कारण लीवर आर्म बदल नहीं रहा था और ग्रेविटी के टॉर्क में चेंज नहीं आ रहा. सो यू हैव टू बी केयरफुल बिटवीन दीज टू क्वेश्चंस. इसमें ग्रेविटी आएगा, उसमें नहीं आएगा. एंड अगर कुछ रॉड कुछ और एंगल में है, एंड अगेन अकॉर्डिंग यू जस्ट सी लीवर आर्म कितने से चेंज हो रहा है. चेंज सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है L/2 थीटा से और हॉरिजॉन्टली कितना मूव हो रहा है L/2 थीटा. जितना हॉरिजॉन्टली मूव होता है उतने से तुम्हारा एक्चुअली लीवर आर्म चेंज होता है. यू कैन ड्रॉ एंड सी. तो जस्ट टू नाउ रैप दिस अप, टॉर्क is ml square by 3 alpha, and then torque is mg L/2 theta plus kl square theta. Okay, so जो बचा हुआ चीज है मतलब इसको उधर ले लो, then that becomes omega. So time period is 2 pi by बचा हुआ चीज ओमेगा स्क्वायर है, 2 pi by omega मतलब रूट ऑफ से ml square by 3 divided by mgl/2 plus k l square. Of course you can see. Got it?
I think, let me just check. Yash, तेरा सही है क्या? Yeah, it seems correct. Perfect. Nice. ठीक है. Chalo guys, see you tomorrow. Again, if before tomorrow's lecture, if you have any specific things you want to discuss from that particular topic, कल का देखना पड़ेगा क्या है. Any specific concepts you want to discuss, you can post that and we can target those. I'm sure you're all familiar with the basics, but if there are concepts you're struggling with, we can work on those in that 1.5 hour frame. Right? Chalo, bye bye.